बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स और ग्रेडियंट्स how they play their role in learning, or there are basically two problems that we do in machine learning. Either we are solving f of x equals to 0, or we are solving trying to find the minimum of f of x, right? So if the function is this one, x square minus 25, in that case इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी विल फाइंड x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 बाय यूजिंग आवर कैलकुलस दैट वी नो। और अगर हम इसका मिनिमम निकालना चाहेंगे, सो इन दैट केस वी पुट द डेरिवेटिव f of x equals to 0, and that will figure out what is the minimum of this function. While this plus minus 5 is the value जहाँ पे function जो है f of x जो है that is actually equals to 0. So let me plot this thing here. So अगर मेरे पास x की value है x is equals to let's say minus 10 to 10, or the f of x जो है इसको मैं calculate करता हूँ, which is equals to x dot square minus 25, and then in figure number 2 I plot it x comma f of x, right? Click on. So here we can see कि हमारे पास ये जो मिनिमम है, this is minimum value जो है x की, this is 0 पे आपके पास जो है पूरा ग्राफ की it's convex. So 0 वैल्यू डेरिवेटिव 0 है, और जहाँ पे आपके पास y की वैल्यू 0, this is f of x, and we have these two things. So we have minus 5 and plus 5 जहाँ पे function की वैल्यू 0 है, and then we have the derivative 0 at the minimum. So here this is the way हम find करते हैं minimum by equating the derivative equals to 0. Now coming back to the first problem कि जिसके अंदर f of x equals to 0, f of x equals to 0 का मतलब ये है कि I'm trying to find out the values of the x. ये कौन सा x था जिसके ऊपर function की value 0 हो रही है. So इसका मतलब है कि it's like root finding. So what is the value of x जिसके ऊपर f of x is 0, right? Not x equals to 0. What are the non-zero value? What are the values of x जिस पे function की value 0 है, ठीक है? So this is what we will do today to learn, because the next systems जो gradient descent वगैरह वो सब इसी basic formula पे based करते हैं. So developing the method for the step-by-step computation for a computer, हम यहाँ से start करते हैं कि let's say call Taylor approximation. Taylor approximation ये कहती है कि किसी भी function को approximate हम कर सकते हैं by its value at that function, that point x, plus its derivative times the step that we are taking, delta x, and then plus the second derivative at that point and the square of this step, and so on. So higher order terms. Usually we can ignore the higher order terms क्योंकि delta x जो है it is usually very small, less than 1. इसकी वजह से जो जितनी भी आपके पास higher terms आती जाएंगी, higher order terms, तो उनको हम ignore कर सकते हैं, right? And then we can focus on only these the first two terms for our method. क्योंकि iteratively है तो we can improve. So this is approximated. A function value can be approximated by its value at this point, its derivative at this point, times the step that we are going to take. So now what approximation says, approximation हमें ये बता रहा है कि we can actually calculate the value of the function based on its previous value and the step guided. So this is crucial thing that I want to emphasize. ये जो step है, guided step है, वो यानी इसके पास अपनी एक previous value है, ठीक है, but it also needs some kind of a direction, a vector that we have to add. So the vector element will be coming from this derivative, और उसके अंदर कितना step आपने add करना है, this is the step,
right? And this is the direction जो add होगी. So and in case of many variables तो हम इसको gradient कहते हैं, या फिर single के लिए हम इसको derivative कहेंगे. So it's like this कि अगर मैं, क्योंकि हमारे पास x जो है वो data points के अंदर होगा, samples होंगे जिस पे हम काम कर रहे होंगे. So let's say कि I'm trying to use k to tell कि अच्छा ये steps हैं that computer is going to take one by one. So at xk function की value जो है this is f of xk. इसी तरह से जो next step मैंने लिया है after delta x, इसको मैंने कह दिया x of k plus 1, और इसका जो function value होगी that will be a function value at x of k plus 1, और gradually we are going towards this point. इसका जो root है वो ये है. This is what I want to reach. Okay. Subscript use करने से फायदा ये है कि हम फिर इसको sample का sample ही इस्तेमाल करेंगे. Now वो उस function को अब हम replace कर लेते हैं. Since अब इस function को f of x plus delta x approximated as f of x plus the derivative of x at x delta x, this value x plus delta x जो है ये इसको हम assume करते हैं क्योंकि next values आती जाएंगी, तो हम इसको static value assume करते हैं is the solution value of x at which f of x equals to 0. ठीक है. So in that case होगा क्या? In that case होगा ये कि ये जो since this value is 0, यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं कि f of x equals to 0, so we will replace this by 0. Okay, so we will arrive to this point, और फिर हम इसको अब हम assume करते हैं, let's say कि मैं जिस point पे start कर रहा हूँ वो that is x of k. अगर मैं x of k पे start कर रहा हूँ, so the delta x जो है this will become x of k plus 1 minus x of k, and we have इस equation को हम दोबारा इस तरह से x of k में लिख सकते हैं. ये जो x था this will be replaced by x of k. This x will also be replaced by x of k, and delta x जो अभी हमने इसको define किया है x of k plus 1, ये इससे replace हो जाएगा. So now what we have is, अब हमारे पास we will solve for x of k. इस equation को अब हम solve करते हैं x of k के लिए. ठीक है, x of k के लिए solve कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ों को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे. Take this one on the left hand side. So we will get this x of k plus 1 equals to x of k minus f of xk upon divided by f prime f the derivative of x of k. So what we have here is ये जो value है x of k plus 1, ये basically next value है at time instant k plus 1. ये जो है x of k, this is the previous value or the value at instant k. F of xk जो है this is the value of the function at xk. और इस तरह से ये जो this is the derivative at xk. ठीक है. So for one variable हमारे पास जो Newton method की equation है it is this one, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डेरिवेटिव है यहाँ. अब कीप इन माइंड कि जब आपके पास there might be some cases अगर यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो आपका मेथड it's not going to work. इसमें इनिशियल वैल्यू को अच्छा चूज करना बहुत ज़रूरी है. एंड फॉर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये जो डेरिवेटिव है अगर n वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे तो ये डेरिवेटिव जो है वो जैकोबियन से रिप्लेस हो जाएगा, और बाय दिस वी विल बी एबल टू सॉल्व एंड डील विद द like multiple variables. ठीक है, we will come to this again. Now we will focus on solving f of x equals to 0, और जहाँ पे हमारे पास f of x equals to x square minus 25 है, right? Okay, so this is a step-by-step iterative method. Every step will take us near to the solution, और लिहाजा अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं अपने सिस्टम के लिए.
we have this equation from the Newton's method, x of k plus 1 equals to x of k minus 1 upon f, the derivative of x of k times f of x k. यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 25 सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू एट एक्स के, सो इसको एक्स को मैंने एक्स के से रिप्लेस कर दिया. इसी तरह डेरिवेटिव जो है इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव विल बी 2 टाइम्स एक्स ऑफ के, इसका जब डेरिवेटिव लें. सो प्लेसिंग दिस वी गॉट टू दिस इक्वेशन. अब ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन रेडी है हमारे पास प्रोग्रामिंग के लिए. ठीक है, अभी हम इसको आइटरेटिवली यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स के. हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, we will be arriving to nearest root. Okay, so now I will show you this simple method, right? And right, so clear this here. ये थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर दूं किस तरीके से इसको किया है. व्हाट वी नीड इज इनिशियल वैल्यू. सो मैं इनिशियली एज्यूम कर रहा हूँ कि इनिशियल वैल्यू एक्स ऑफ के, इसको आप एक्स ऑफ के एज्यूम कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने के की वैल्यू 1 की है, काउंटर स्टार्ट किया है, के इक्वल्स टू 1. सो द फर्स्ट वैल्यू विल बी दिस वन. ठीक है, सो फर्स्ट वैल्यू मैंने यहाँ डिफाइन कर दी इनिशियल वैल्यू विच इज इक्वल्स टू लेट्स से 9. आप कुछ भी कर सकते हैं, आप 10 भी कर सकते हैं, व्हाटएवर. देयर इज समथिंग कॉल्ड टॉलरेंस जो इसको स्टॉप करेगी कि जब कन्वर्ज करने लगेगा तो उस वक्त हम इसको स्टॉप करेंगे, उसके लिए यूज किया. नंबर ऑफ मैक्सिमम कैलकुलेशंस इज लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ 1000 तक इसकी इटरेशन रखनी है. सो नाउ दिस इज अ फॉर लूप k इक्वल्स टू 1 कॉलन अप टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ. नाम थोड़ा सा इनका बड़ा इसलिए रखा है ताकि इनकी मीनिंग अंडरस्टैंडेबल. So first we calculate the function. Now what I am calculating here is function by derivative. असल में इस पूरी चीज को calculate कर रहा है. This whole thing is basically the इसको मैंने खुद ही इसका नाम इस तरह से दिया है. This is basically our function, right? Now I have enough place. ये पूरा पोर्शन जो है ये मैटलैब में जो नाम रखा मैं थोड़ा बड़ा वेरिएबल है, लेकिन ताकि हम इसको बाद में जब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम तो हमें समझने में आसानी हो. डेरिवेटिव, ठीक है. सो दिस इज इन मैटलैब वेरिएबल जो मैंने अभी इसको नाम दिया है दिस थिंग. और इसको हमने कैलकुलेट किया. इसको और से अगर हम देखें तो व्हाट वी हैव हियर इज वी हैव माइनस 1/2 टाइम्स एक्स के और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स ऑफ के स्क्वायर माइनस 25 से. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट व्हाट आई एम डूइंग इज इसको इस तरह से हमने ऐड कर दिया है, लाइक ये यहाँ पर ऐड हुआ है. ठीक है, जिस तरह ये यहाँ पे अब ये कैलकुलेट हो जाएगा और फिर ये एक्स ऑफ के साथ ऐड होगा, एंड देन वी विल हैव द न्यू वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ के प्लस 1. दैट्स इट, बस इतनी सी इक्वेशन है. और व्हाट वी आर डूइंग हियर इज द फंक्शन बाय डेरिवेटिव. इसकी टॉलरेंस को हम चेक कर रहे हैं बेसिकली कि फंक्शन बाय. नाउ द आइडिया इज क्वाइट सिंपल कि जैसे ही आपके पास कन्वर्ज करने लगेगा तो the derivative जो है this will the function value with its derivative is taken as the tolerance here for breaking. Okay, now let me run it. F5. So अब इसने accurately yeah, so let me run it again. F5. तो ये देखें तो ये आपके पास कोई कैलकुलेशंस नहीं है, बट हमने स्टार्ट कहाँ से किया था. आप चाहें तो यहाँ पे हम x को प्लॉट कर सकते हैं and we can see or let me figure 4 and plot directly let me define length of vector. Let's say r is equals to 1 is to length of x, right? Size of x, what is the length size of
So 1000. So let me. Okay. Then I need to plot x comma was r, right? So plot r comma x. Okay. ये कन्वर्ट हो चुका था. शुरू में देखें तो ये इसकी वैल्यू आ रही है. I want to show you few of the. अच्छा, हम शुरू की कुछ values को from 1 to 5. ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो x की वैल्यू हमने 10 से स्टार्ट की थी, फ्रॉम 10, सेकेंड स्टेप में ये 6.25 हुई. उसके बाद कैलकुलेशन स्टेप्स को भी मुझे 10 कर देना चाहिए, राइट. दोबारा से हम चलाते हैं इसको. F5, okay, clear again, and yeah, so F5. और अब आप देखें तो ये आपके पास कैलकुलेशन 5 तक आई है. Now if I plot x, so the value of x is, यहाँ से भी हमें x मिल सकता है. Here it is. I need to clear. Clear all. Okay, now clear again, and अब हम run करते हैं इसको F5 से. So tolerance, what happened here? What is the problem? And what is the problem here? I think मेरे ख्याल से कुछ error. Yeah, so if I click here and try to see, ये देखें कि यहाँ पे highlight हुआ हुआ है. These are, this is the same, but कोई इसमें spelling mistake. Now, if you click, now the three variables are okay. Okay, now the problem solved. CLC again, F5. So this is what we have here. अब देखें तो शुरू में we have started. It is difficult. अभी आपको दूसरे डेमो दिखाता हूँ. लेकिन यहाँ देखें तो हमने 10 से स्टार्ट किया. तो पहली वैल्यू x की 10 की थी, फिर रूट की वैल्यू 6.25 आई, 5 होते होते यहाँ पे 5 पे कन्वर्ट कर गई. If I take it like let's say minus 20. So let's see F5 and then plot it. ये देखें minus 20 से होता हुआ minus 10 हुआ, फिर minus 6.5, 5.7, 5. minus 5, and it finally converges to minus 5. ठीक है. Okay, now I will show you the actually gradient descent किस तरह से इसमें काम करता है, step by step with the moving points. ठीक है. I intentionally have tried to show you कि ये देखें प्रोग्राम किस कदर सादा है to calculate the roots or the solving this optimization problem. अब इसको this will help us to see कि हमारे पास actually अब -10 से मैं स्टार्ट करूँ और आप देखिएगा कि किस तरीके से आपके पास ये सिस्टम कन्वर्ट करता है. नंबर ऑफ कैलकुलेशन लेट्स से 10. F5 let me figure 1. So we have a figure here again. This problem, yeah, again यहाँ पे भी वही problem थी. Sorry for this. Derivative. Now it is being solved. Function derivative, yeah. Okay, so this is the
I will show you this in a minute. What we have done is इसी तरह से initial value है, फिर tolerance है. Tolerance is let's say 1, the exponential minus 3, k is the counter, number of calculations. अब ये मैंने कुछ plots add किए हैं for so that के points plot हो और फिर one by one आपको उसका नजर आए. I am using the delay so that के वो plot हो, उसके बाद वो 1 second का delay हो, फिर हम उसको देख सकें. And then this is the scattered plot of the value जो उसके ऊपर plot करेगा point को. And then there are some prints. मुझे full screen कर देना बेहतर है, right? ठीक है. And okay, so give me some more value here. Yeah. Yes. ठीक है. And then we have main function. अब यहाँ पे function by derivative और x of k की ये नई वैल्यू हमने कैलकुलेट की. देन देयर आर सम printfs कि नई वैल्यू क्या थी, उसको प्रिंट किया है. फिर जो नई वैल्यू आई उसको स्कैटर प्लॉट पे प्लॉट करेंगे, मेन पे प्लॉट करेंगे उसका पॉइंट. एंड देन देयर इज अ स्टेटस के हम कहाँ तक पहुंचे, इसका स्टेटस क्या है. एंड देन फॉर द टाइम बीइंग लेट मी leave this one. And yeah, okay. Okay, now I will run it. F5 here. अब आप ये देखिए कि you can see it's moving, and then finally it reaches to -5. Okay, let me put it here. I can increase the tolerance delay 2 तक कर देते हैं ताकि हम इसको देख सकें. 3 तक कर देते हैं. Okay, and then we will start again. So basically program यही वाला है. ठीक है, program exactly यही है, but this is going to demonstrate कि किस तरीके से gradient descent move करेगा step by step. Okay, so now you see iteration number 3, the value is this one, और ये gradually अब आपके पास वहां से move होता हुआ आ रहा है. ठीक है. अच्छा, now this was fast enough. शुरू में इसने देखें कितना jump लिया है, उसके बाद अब ये सारे छोटे छोटे points आपके पास आ रहे हैं. And now it is converged. If I do it like this, -20 अगर मैं कर दूंगा तो this will not be in, let's say minus अब मैं अगर इसको 10 कर देता हूँ. ठीक है. So if I come from this side तो फिर हमारे पास क्या कन्वर्जन. अब ये देखें, ये इसकी फर्स्ट वैल्यू, देन इट्स द सेकंड, ये अब इसकी थर्ड वैल्यू आई 5.125, और उसके बाद ये छोटी छोटी वैल्यू इसके ऊपर आ रहा है. Now it is going to convert soon. Now this is the value. So जब हम आपने इनिशियल वैल्यू इसको दी +10 की तो ये 5 पे आया, और जब -10 दी तब आप इसके ये इस तरफ आया -5 के ऊपर कन्वर्ज किया, क्योंकि इसके दो सॉल्यूशंस थे. सो इट हेवीली डिपेंड्स ऑन के इनिशियल वैल्यू क्या दी है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट. अच्छा, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स है दैट यू शुड डू, ट्राई टू डू. अगर मैं इसको there is something called ये learning function, आपको समझ में आएगा. ये डेरिवेटिव के अंदर है, 2 है, इसको मैंने कर दिया सिर्फ 20. and now I want to see कि अब होगा क्या. now you see the steps are small. अब आप देखें तो अब जो स्टेप ले रहा है वो स्मॉल है. क्यों? क्योंकि जो रिमेंबर व्हाट आई सेड कि हम लेंगे इसका लेट्स से प्रीवियस वैल्यू होगी और एक डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन के साथ स्टेप है. सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने जो इसका स्टेप था उसको जो पहले 2 था 1/2 था, उसको अब 1/20 कर दिया. सो द स्टेप इज स्मॉल नाउ, और इट विल टेक सम मोर टाइम, लेकिन थोड़ा प्रिसाइज होगा, स्लो हो जाएगी कन्वर्जेंस. इसी इट्स नाउ, और अब इसको मैं देता हूँ लेट मी माइनस, और वो उसकी वैल्यू भी approximately, and we have big error.
सो अप्रोप्रिएट अगर नहीं है तो हमारे पास एरर बढ़ जाएगा. नाउ द सेम विद आई जस्ट ट्राई टू शो यू कि किस तरह से स्टेप जो है उसका बड़ा होगा, और ये नाउ इट इज हैविंग अ बेटर स्टेप राइट नाउ. ठीक है. सो दिस इज हाउ this is the thing that I wanted to show you कि किस तरह gradient descent yeah method जो है Newton method is going here. Gradient descent is basically a Newton's sort of method, और उसमें भी हम इसी तरीके से मूव करेंगे, वहां पे gradient आएगा. ठीक है. So that's all for today, और thank you very much.